also if you have laugh lines. So what you do is pick your laugh line like this. The very first thing is washing your face. Very important, because no matter if you're doing your makeup for the morning thing, like if you have a function or any kind of festivities in the morning or in the evening time, you need to wash your face, because you don't want any kind of dirt or any kind of sweat, because both of these things will make your makeup slip off. तो हमें वो नहीं चाहिए, हमें चाहिए एकदम clean canvas. शुरू करते हैं. Very first thing, you have to wash your face. As I told, I've washed that already. So rose water is really good. It's really lightweight. It refreshes the skin and it's really hydrating. So that is the second step, that is applying your toner. तो अभी हमने toner लगा लिया. Now after that, they'll use kind of an essence or any emulsion on the skin, like 2 layers, and that's that. तो वो मैं भी करती हूँ, that I love applying the essence, because that way heavy, like I'm not applying anything heavy on my skin. Sheet masks also, these ones from the brand SNP के sheet mask है, कोई Dermaco का niacinamide sheet mask भी है. You can apply this. But when you apply niacinamide, it does not react to any other chemicals that might be there in your makeup. कि अगर आपको आदत नहीं है मेकअप लगाने की और फिर आपने ऊपर से विटामिन सी लगा लिया या कोई ऐसा सीरम लगा लिया जिसमें एक्टिव्स हैं which might cause irritation, तो niacinamide सीरम आप लगाएं, because that will help in soothing your skin. तो कोई irritation नहीं होगी, कोई reaction नहीं होगा, and niacinamide really does help oil production में भी help, मतलब control करता है. Like if you're one of those who has a lot of oiliness going on और आपका मेकअप टिकता ही नहीं है, तो आप वो भी कर सकते हैं. Now moving on to the next step is that applying a lightweight moisturizer. बहुत ज़्यादा नहीं लगाना है. अब आपने क्या करना है, moisturizer थोड़ा हल्का सा ही लेना है और mainly focus आपने करना है अराउंड दी एरिया जहाँ आपकी जो फाउंडेशन है वो क्रैक होती है, जैसे कि अराउंड दी आई एरिया, इधर में, इधर जहाँ जहाँ आपको क्रैक आता है या रिंकल्स है जहाँ पे, इधर और इधर. बट आई एरिया में आप मेक श्योर करें कि यू आर अप्लाइंग लिटिल बिट ऑफ मॉइस्चराइजर फॉर श्योर. नाउ यहाँ पे ऐड करूँगी कि लाइक इफ यू आर वन ऑफ दोस्त की जिसने मॉइस्चराइजर स्किप कर दिया और बहुत ही लाइट वेट मॉइस्चराइजर यूज़ किया या नहीं भी कर रहे हैं, तो नेक्स्ट स्टेप अगर आपको चाहिए कि आपकी फेस बहुत ज़्यादा शाइनी एंड ग्लोई दिखे, रादर देन फोकसिंग ऑन द मॉइस्चराइजर, हैवी मॉइस्चराइजर, यूज अ स्ट्रोब क्रीम. तो स्ट्रोब क्रीम जो है बहुत सारी अवेलेबल है मार्केट में, स्विस ब्यूटी, ये वो बहुत सारे ऑप्शंस हैं. आप ज़रूर खोज के निकालें आपके लिए कौन सी आपको अच्छी लगती है. मैं लगा रही हूँ मैक की ये स्ट्रोब क्रीम, और अगर आपको खुद की भी बनानी है तो वो भी बना सकते हो. अपना मॉइस्चराइज़र में हर लाइट वेट सा, उसमें लिटिल बिट आप इल्यूमिनेटर डाल दें और आपको बन जाएगा स्ट्रोब क्रीम. रियली डोंट नीड टू बाय एनीथिंग, यू नो. ऐसा भी आप कर सकते हो, तो वो भी आप कर सकते हो. और मैं फोकस करने वाली हूँ अराउंड माई चीक एरिया. तो कैन यू सी हाउ nicely the skin is glowing and it's shining. So I'm going to use this fixing spray. You can use any. I'm using Nykaa fixing spray. Then after that, what you'll do is you'll immediately apply a loose powder or any kind of pressed powder use कर देना to settle everything. Then after that, you're going to use is a primer. अब प्राइमर स्किप ना करें, स्पेशली अगर आपकी एजिंग स्किन है लाइक मी, बिकॉज प्राइमर रियली डज हेल्प, स्पेशली रिंकल्स और ये सब. तो थोड़ा सा मैंने प्राइमर ले लिया एंड आई एम गोना अप्लाई around the areas where I feel that I have open pores, where I feel that my makeup slips. After that you're going to use your foundation. तो अभी फेस्टिव सीजन में हमें ऐसी फाउंडेशन चाहिए होती है which is lightweight, which does not clog your pores, which will not cause any kind of that irritation, because काफ़ी लंबे समय तक आपको फाउंडेशन लगा के रखनी होती है. तो In my hunt for the best of the best foundation, I found the Dermaco's 2% niacinamide high coverage foundation. It also has power of 2 amazing ingredients. It has 1% hyaluronic acid, which helps keeping the skin plump, and with that it has 2% niacinamide, which actively reduces the dark spots of the skin from within. And the best part is that it comes with SPF 40 PA+++. The foundation comes in 7 shades suitable for every Indian skin tone. 01 Ivory suits me the best, and that is the foundation that I'm applying right now, and it's really the perfect match for my skin tone.
Also, one more thing that I really liked about this foundation is that it is water resistant, and I'm going to test it in front of you for now. What I'll do is I'll take this foundation, I'm spraying some water. As you can see, with the water it reacts and it just does not stay put, and it is, as you can see here, it's becoming patchy. But on the other hand, when I take the Dermaco foundation, when I spray the water, it really does not budge the foundation. As you can see, the water droplets are just flying off from the foundation, and बहुत ही अच्छा foundation है with a long stay, water resistant. And every time you buy from Dermaco, you're not only investing in your skin but also contributing to a noble cause. The Dermaco has empowered 10,000 plus young students this year. For every product you buy from them, they will link your order to a child that they help educate with Bhumi. You can apply coupon code Rachna 2023 for 20% off on their website, and they're also available on Amazon, Flipkart and Nykaa. It's giving me like full coverage. I don't even need a concealer, and it feels so lightweight. नेक्स्ट जो टिप एंड ट्रिक है कि इससे पहले ये फाउंडेशन ड्राई आउट हो जाए और आपके उसमें क्रीज होने लगे, तो व्हाट यू डू इज यू टेक लिटिल बिट ऑफ पाउडर, डायरेक्टली नीचे देखेंगे, एंड देन यू विल प्रेस अराउंड दिस पार्ट ऑफ द आई and then seal it. Now for laugh lines also, if you have laugh lines, so what you do is pick your laugh line like this and then take the powder तो अभी ये चीज़ बिल्कुल भी विजिबल नहीं होगी. सिमिलरली अराउंड द आई एरिया आई फील मुझे थोड़ा स्पंज का यूज़ कर लेना चाहिए बिकॉज द ब्रश इज नॉट रीचिंग वेरी क्लोज टू द आई एरिया. तो मैं थोड़ा सा पाउडर और लूँगी, then I'm going to press this part of the eye, this. Don't forget the inner corner, especially as you start aging. अगर आपके dark circles हैं तो ये नहीं होगी, अंदर में यहाँ पूरा black है और बाकी सारा white है. Eyelids को भी press कर लीजिए so that they don't crease. This is the daylight effect. Like I've not used any flashlight or something. Can you see how flawless this thing looks? This technique. Even मेरे जो hollowness की eyes थी वो भी छुप गई है, and everything looks really blurred out और blurred out effect लग रहा है जैसे कि मैंने कोई filter लगाया था कि नहीं लगाया, and that is how this technique works. So this is what I wanted to share with you. The skin prep that you should be doing is na zyada na kam. It should be a balance which will give you that flawless look and which will make your makeup last longer. I hope आपको अच्छा लगा. Do comment below any questions you might be having. If you want me to share products, I can make a shorts on that and I can share with you the particular products that I used. इसलिए नहीं दिखाया because I don't want you to think कि वही product से result आएगा. नहीं, किसी से भी आ जाएगा. ये ऐसी trick है तो मैंने देखी थी Insta पे and it worked and I wanted to share with you. So do try it. Do let me know, and if you have any other suggestions for the videos, do comment below. I'll see you in the next video. Like कर लो and bye. Take care.